everyone, how are you all doing? This is Debanshi. Welcome back to my channel. Since a lot of you must have known by now that I'm preparing for an exam called CLAT, so I have been receiving a few mails where people are asking me what all resources am I using for my preparation. So I thought I'll make a video altogether to help you out. Alright, but before getting into the video, please do subscribe to my channel. मैं हमेशा बेशर्म की तरह तुम लोग को बोलती रहती हूँ सब्सक्राइब कर दो करती नहीं हो यार. क्या क्या मतलब क्या चला जाएगा, कर दो, फ्री है, कर दो प्लीज, करो अभी करो 1 सेकेंड लगेगा, करो. आई साउंड सो डेस्परेट. मतलब जिस तरीके से मैंने अभी बोला ना, जो लोग करने वाले होंगे वो लोग भी शायद नहीं करेंगे. एनीवे, कितना बकवास करती हूँ मैं. एनीवे, लेट्स गेट टू द पॉइंट. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एवरीथिंग दैट आई डू इन माई प्रिपरेशन. ऑल्दो आई अग्री आई माइट नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड you with this, but since there are a few percentage of people who are asking these questions to me, I want to help them. So that is the only reason I'm making this video. I just want to be of help. I don't want to claim I know everything about this preparation. No. My teachers guide me. I watch a lot of toppers interviews and I get ideas from them. So yeah, that is how I plan my resources and whatever I have to study. Otherwise, beginning with English. For English, I'm being very honest with you. I just have Renan Martin's grammar book. That's the only book I'm using for my English preparation. Apart from that, I have this habit of reading a lot of books, okay, novels. See, the problem with people is they have this very wrong idea about reading books. लोगों को ऐसा लगता है कि वो बुक्स पढ़ेंगे, they will come across hundreds of new words and they are going to remember all of them and the purpose is solved, their vocabulary will improve. Does not happen that way. I'll tell you what I do. Suppose I am reading a book and I come across a new word. I do 3 things after that. Number 1, I look it up in the dictionary. I find out its meaning and usage. Number 2, I note it down in my diary with its meaning. And number 3, I try to apply it in my daily life. Okay, while talking to somebody or while giving Instagram captions, I'm giving you a very good idea to use with your captions. You can make your captions look more attractive and catchy by using good words. वहाँ पे use कर सकते हो. Or else if you are writing something, you can use good words. Okay, so these 3 things I do. I would not claim that my vocabulary is pretty awesome. It's not even pretty good, to be honest, but I'm trying to improve it, and here I'm telling you my ways in which I try to improve my vocabulary so that you can implement them and you can better yourself. Okay, so whenever you come across a new word, find out its meaning. After finding out its meaning, note it down somewhere with its meaning and with its usage. Frame your own sentence around it and write it down and use it repeatedly. Apart from that, you can go for books like English is Easy. I've heard it's a very good book. And What Par Made Easy. Yeah, these 2 books are always recommended. Go for them. Okay, now coming to current affairs, I don't particularly use any book for that. I refer to my coaching का magazine, monthly magazine. देन न्यूज़पेपर नोट्स. हाँ, इंग्लिश के लिए और एक चीज़ बोलना भूल गई. हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ना, समझ में आए ना आए, कुछ ना आए, पढ़ना, ठीक है, बहुत इंप्रूव होता है. और जो 3 चीज़ें मैंने कही, यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड, डू दोज 3 थिंग्स. ओके, इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश. ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू टेक यू अ लॉन्ग वे एंड develop a reading habit. Please, you don't know guys, it is going to do wonders to you. I'm telling you, develop this habit. Anyway, coming back to current affairs, I refer to newspaper, The Hindu. Then I refer to GK Today and my coaching material. That's all I do for current affairs, nothing else. And for awards and appointments, I refer to some YouTube channels. You'll get good YouTube channels. Just search for recent awards, recent appointments, landmark judgments, anything you want to know. For legal current news, I often read articles on livelaw.in. That helps me a lot. Then for legal reasoning, there's this very good book by AP Bharadwaj. If I find the picture, I'll just show it here. I find that book to be really nice. Okay, so that is a book that I have. Otherwise, I think see, I am taking coaching, so I have a cushion to fall back on. We are provided materials, we are provided everything. But if you are somebody who is preparing on your own,
then you need to have a certain resources. So for legal, I think that book is really nice. Then for reasoning, there is this verbal and non-verbal reasoning by R.S. Agarwal, I guess. That is a really good book. Go for that. That is the only book I have. And now there is a lot of critical reasoning involved. So for critical reasoning, honestly, I don't have any knowledge of any book. आप गूगल में सर्च कर दो, आपको better ideas मिल जाएंगे. All right. And apart from that, what else? हाँ, मैथ्स के लिए यार 10 तक का मैथ्स है, ज़्यादा 10 तक का ही मैथ्स है. वही परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें हैं. You can practice it from your school books also. It does not matter. Or else what you can do is you can search for some free papers. या तो फिर if you don't want to pay for coaching, you can at least pay for some material. If you can do that, it would be better, I guess. Otherwise you can just search for free questions, sample questions of CLAT, and you can practice them. So this is all that I do. And for mock tests, my suggestion to you would be enroll yourself somewhere just for giving mock tests. Yeah, that's the only way of giving mock tests, I guess. You will have to enroll yourself or else go for the free mock tests. But free mock tests का ये होता है ना कि बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं, और क्वेश्चंस मैंने देखा है कि थोड़े इजी होते हैं इन कंपैरिजन. ऑल्सो प्लीज़ अवॉइड ऑल दीज नॉइजेस, ठीक है? कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है. आई डोंट रियली हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू शूट हियर. या सो और क्या बोल रही थी? आई थिंक मोर और लेस एवरीथिंग आई हैव कवर्ड. एंड या दैट्स अबाउट इट. इतना ही करती हूँ और कुछ नहीं है. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आई थिंक मैं हटा देती हूँ आंसर करके उसको. लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग, आर यू अ ड्रॉपर, आर यू अ रिपीटर, आर यू रिपीटिंग, आर यू अ ड्रॉपर? येस, आई एम अ ड्रॉपर. एंड I'm being very honest about it. There's nothing to hide. I was a science student. So last year मैंने CLAT दिया था. I could not score well. Okay, I could not score well. Rank अच्छी नहीं आई थी तो obviously selection नहीं हुआ. I was accepted to a private school, to a private law school. वहाँ पे I had qualified their entrance and their interview. But to be honest, that as much as I have heard of it, it's not that great for law. Obviously I'm not taking the name, but anyway, that is why I thought of giving myself a second chance. So a lot of people are also asking me, how wise is it to take drop? If we don't get a college even after a drop here, then what should we do? I would say keep your options open. Apply for CLAT, ALET, SLAT, CULE, CHRIST का, then BLAT, LSAT, MHCT law, जामिया मिलिया LLB. आई थिंक बहुत सारे एंट्रेंसेस है. कीप योर ऑप्शंस ओपन एंड गिव योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट, जस्ट डू योर पार्ट एंड गिव योर 200% टू दिस प्रिपरेशन. एंड बाकी तो देखा जाएगा. तो या, आई एम अ ड्रॉपर एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस and also for some other law entrances. So if I don't get a good national law university, यार मेरी ज़बान कितनी अटकती है ना, anyway, then I will probably prefer some other good private school. ठीक है, तो बस यही है और क्या. हाँ, इतना ही कहना था. I hope this video was helpful. Share it with your friends if you think someone is interested in pursuing this, या फिर if you think someone might get a little bit of help from this video. डू पास इट ऑन. और मतलब क्या सिर्फ मैं ही बताऊँ, सिर्फ मैं ही करूँ सब कुछ? तुम लोग भी अपने टिप्स दो ना मुझे, जिससे मेरे रैंक और मेरे मार्क्स थोड़े बेहतर हो सकते हैं. अभी तो पहले बहुत कम आया करते थे, अभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रही हूँ, टच वुड. एंड ऑल्सो someone commented and he or she, I don't remember, deleted that comment. और उसने वहाँ पे लिखा था कि why are you telling about your plans and your goals to people. नज़र लग जाती है, डिमोटिवेशन आता है और आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे. तो पहले तो दैट स्कैर्ड मी अ लॉट, बट फिर मैंने सोचा कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छा है ना कि आप लोगों के साथ करो. यू लर्न टुगेदर एंड दैट इज़ हाउ यू ग्रो. तो मुझे तो पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ. अब देखो, मैं कभी ना, मेरे बारे में मुझे ये बात अच्छी लगती है कि मैं कभी फेलियर से डरती नहीं हूँ. लोग अभी यही सोच के बोला होगा कि अरे तुम दिखा रही हो, तुम कितना पढ़ रहे हो, फिर भी अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो फिर लोग मजाक उड़ाएंगे. सही बात है, बट मैं ये मान के नहीं चलना चाहती हूँ कि मेरा नहीं होगा क्लियर. ठीक है,
तो अब जो होगा वो होगा, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं मुझसे जितना हो सकता है, मैं जितना कर सकती हूँ मैं इतना कर रही हूँ, और आपको भी मैं वही बोलूँगी। चलो बहुत बकवास कर ली मैंने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताओ अगर वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो। और क्या बोल रही थी, हाँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेपरेशन।